saying sorry enough after what all has already been said? That's the big question facing YouTuber and podcaster Ranveer Alhabad alongside others who are now having a police complaint filed against them. Social media influencer and podcaster Ranveer Allabadia, aka BeerBiceps, is now facing intense backlash, both online and in court. A legal complaint has been filed against Ranveer Allabadia and comedian Samay Raina, the host of India's Got Latent, accusing them of promoting obscenity, escalating an already heated controversy. Now, the complaint has reached the Mumbai Police Commissioner and the State Women and Child Commission. Meanwhile, the Hindu IT cell has submitted a formal complaint to the Ministry of Information and Broadcasting. Adding to the fire, Shiv Sena UBT leader Priyanka Chaturvedi has vowed to raise the issue in the Parliamentary Standing Committee on IT and Communication. प्लेटफॉर्म्स को ये समझना होगा कि यू कैन नॉट जस्ट बी मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ अस, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अकाउंटेबिलिटी की, उसमें आप कहीं ना कहीं लूप होल ढूंढकर आप कहते हैं कि आपके क्षेत्र में नहीं आता है, आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है. आई हैव माई सेल्फ बीन एट द रिसीविंग एंड. जो स्लैंडर कैंपेन्स चलते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो बना देता है और फिर वो दूसरे पिकअप कर करके और उसको बढ़ाते हैं, और यूट्यूब अपना हाथ पीछे कर लेती है कि नहीं, हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस को नहीं वायलेट करा है. सो समवे वी विल नीड टू एंश्योर कि जनता को याद दिलाएं, जनता से ज्यादा ऐसे यूट्यूबर्स को याद दिलाएं कि एवरीथिंग इज नॉट coming without responsibility. Your freedom of speech and your freedom for content creation also comes with certain guidelines and certain boundaries. Don't cross those boundaries. And now we have actor Manoj Joshi joining us on the phone line for that big story. Manoj Joshi जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बताइए, अभी रणवीर अलाहाबादिया ने वो वीडियो डाला है सोशल मीडिया में जिसमें वो बिल्कुल सॉरी बोल रहा है, उसकी गलती मान रहा है, बट सवाल ये है कि वो सॉरी बोलना इस वक्त काफी है या नहीं? एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये सोशल मीडिया पे या स्वतंत्र रूप से स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे जो अभद्र और विकृत नंगा नाच किया जाता है, मतलब गालियां बकना, गंदगी बकना, अपनी माँ बहन, हमारी संस्कृति में उनको एक माँ को एक भगवान का दर्जा है हमारी संस्कृति में. ओके, और हम बच्चों को क्या परोस रहे हैं, ये यंगस्टर्स को, और फिर इस प्रकार से लोगों को, मतलब बच्चों को या नई पीढ़ी को अधपतन में लेके जाना, उनका वैचारिक मर्डर करना, यही बोलता हूँ. तो उसके लिए वो माफी मांगे या कुछ भी करे, वो एक व्यक्ति की बात नहीं है. इस प्रकार के विचारधारा को ही काट कर फेंक देना चाहिए कि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, हमें स्वातंत्र्य है बोलने का, हमें स्वतंत्रता मिली है. अरे ये स्वतंत्रता मिली है उन लोगों के बलबूते पे जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है. ये नंगा नाच करने के लिए नहीं मिला है. और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अर्थ ये नहीं है कि मैं हाथ फैलाऊं और बाजू वाला जा रहा है तो उसके गाल को लगे, हमारे नाखून लगे. ये अभिव्यक्ति स्वातंत्र नहीं है. अभिव्यक्ति स्वातंत्र का मतलब ये है कि मेरे से किसी और को नुकसान नहीं हो रहा है. और ये सारी जो युवा पीढ़ी है, ये इस प्रकार से बहुत भद्दे तरीके से, विकृत तरीके से उनको बर्बाद करने का ये पाप रचा जा रहा है. तो इनको आप ये कह रहे हैं कि कुचल देना चाहिए कानून के तहत. मतलब केंद्र शासन हो, केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसके खिलाफ एक सशक्त कानून बनाना चाहिए कि आप इस प्रकार से कुछ भी आके प्लेटफॉर्म पर बोले. ऐसे शोज होते हैं थिएटर में, आपको पता है. एक नाटक को एक शुरुआत करने के लिए या नाटक का मंचन करने के लिए उसको सेंसर. मनोज जोशी जी, मैं वापस वही सवाल पूछूंगा कि रणवीर अलाहाबादिया ने सॉरी बोल दिया, उन्होंने वीडियो डाल दिया कि उसको जानता तक नहीं हूँ, वो सॉरी बोल देने से ये नहीं होता है. उसको ऊपर जो भी करे वो नहीं, उसके जैसे जितने भी हैं. और ये स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे जो हो रहा है ना, ये गंदगी ये बंद होनी चाहिए. वो कोई सॉरी बॉरी का मतलब नहीं है. ये एक बार वो सॉरी वो कौन है क्या है मैं तो जानता तक नहीं हूं उसको. ओके,
Okay. और आप क्या हो ना, ये इस तरह से जो गया है वो जानबूझ के नहीं, गलती से नहीं निकला है उसके मुंह से, वो जानबूझ के गया है। मेरे मुंह से कुछ निकल जाए, लेकिन मैं जानबूझ के गया हूँ कि मैं गंदगी में जा रहा हूँ, मैं गंदा बोलने वाला हूँ, अभद्र बोलने वाला हूँ, विकृत बोलने वाला हूँ, ये सोच समझ के जाना। और मनोज जोशी अगर बोल भी दिया, अगर पहले एक बार बोल भी दिया, ये तो मतलब लाइव थोड़ी गई थी, ये तो मतलब एडिट करके डाला गया था सोशल मीडिया पे, तो एडिट करते वक्त तब भी एडिट कर सकते थे। करेक्ट। तो मेरे जहन में, मेरे दिल में, मेरे आत्मा को उस वक्त जाते वक्त मुझे कुछ नहीं लगा। दैट मीन्स आई एम लाइक दैट। और सिर्फ बोलने के लिए बोल देना सुपरफिशियली नहीं, इस पर कानूनन कार्रवाई करनी ही चाहिए, ये नहीं। और ऐसे कई लोग हैं, हर राज्य में इस प्रकार के लाइव शोज होते हैं, 5-5 हजार की टिकटें होती हैं। ये स्टैंड अप कॉमेडी के नाम के जो अभद्रता की जाती है, उन पर अंकुश लगाना ही चाहिए। हर थिएटर वाले को कंपलसरी तुम कौन सा कंटेंट देने वाले हो ये हमको बताओ। और वहां की जो सरकार है उसने भी अंकुश लगाना चाहिए ऑर्गेनाइजर पे और सबके ऊपर। Absolutely. Manoj Joshi ji, thank you so much for taking time out to be with us. Let's, in the meanwhile, let's also listen to that apology that came in from Ranveer Alhabad. My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. And now we have Rahul Ishwar, author and activist, also joining us live on the broadcast. Rahul, thank you so much for taking time out. Simple question at this stage is that sorry that came from Ranveer Allahabadia enough? Or more importantly, is it time to cancel India's Got Latent? I have raised the complaint to Mumbai Police in the morning. The Joint Commissioner of Police, Satyanarayan ji, responded to it, and he has forwarded my complaint to DCP Mumbai for further action. I would say that apology is a positive step, a step in the right direction, but the apology is not enough. There should be a FIR filed, because there are other people, millions of youngsters who are watching this. They should know that if they cross a line, there is a consequence to it. There is a legal consequence to it. Let me be very honest with this. I'm a Hindu right-wing activist. I know I have all sympathies to Ranveer Alhabad, who is a center-right person. But having said that, this is not about politics. This is far more deeper and far more higher. It is about ethics. It is about family. It is about culture. And we cannot take any compromise on this particular thing. That's the reason why we need to take a stand against this, and FIR needs to be filed. Otherwise, a lot of other YouTubers who will do anything for views, likes, shares, and reach will do such kind of things and say sorry and will try to get away. A legal action called FIR should definitely be taken, because this is perversion, this is crossing the line, this is absolutely unacceptable. I really respect and like Ranveer Alhabad for the good content he is giving. But whether you belong to a left, Dhruv Rathi, whether you are a right, Ranveer Alhabad, doesn't matter. Perversion is absolutely unacceptable, and I have invoked section BNS 296, IT Act 67A, and raised a very solid complaint. I hope police will file a FIR on that complaint in spite of the apology. Right, in spite of the apology, and what is the kind of punishment that they will be looking at, Rahul? If you can tell us that as well. What, be it Ranveer Allabadia or Makija or Samay Raina? It is basically under BNS 296. BNS 296 means that offense is cognizable. The police can arrest the offender even without a warrant.
under BNS 296 and the imprisonment up to 3 months and all. I don't think it will come to that. He will take some kind of a bail from the honorable court and the case may go on for years. But the larger point is, unless somebody takes this action and teach these kind of content creators a positive lesson, our youngsters will be misled. I'm telling this as the father of 2 youngsters. One of my elder son, he's 8 years old. He's a huge YouTube fan. I'm really genuinely worried if they are seeing these kind of content. Where will we reach? And 2 things nobody should touch, that is faith and family. There are 2 Lakshmana Rekhas that no one should cross, whether it is abuse, hate speech towards any faith, be that matter, Hindu, Christian or Muslim, doesn't matter. Family is a sacred institution we have. These kind of 2 things should not be brought out as butt of jokes of perverted comments. So I hope such kind of strong reaction will help our creative economy being cleaned up, our orange economy being cleaned up in a positive way. Right, stay with us, Rahul. The debate has now shifted from audience normalization of such content to serious allegations of obscenity in the most profane way. Let's listen to what the legal counsel and Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis had to say. जो भी ये बना रहे हैं वो पॉपुलर है, वो सारे के सारे सोशल मीडिया पे एक अच्छा नाम है, लेकिन इसके अलावा भी उन्हें पैसे अर्न करने होंगे, या उस जो जिस चैनल के थ्रू, जिस यूट्यूब चैनल के थ्रू ये सामने आ रहे थे, उसके थ्रू इन्हें पैसे कमाने थे. तो ये एक इंटेंशन दिख रहा है. यहाँ किसी भी क्राइम के पीछे एक इंटेंशन होता है, तो ये साफ एक क्राइम का पार्ट है. तो इस पे इन्वेस्टिगेशन हो, और महिलाओं को लेकर ये जो बातें की गई है, जिसे ध्यान में रखकर ये कंप्लेंट साथ ही साथ नेशनल वुमेन कमीशन जो है, उनकी जो प्रेसिडेंट साहब है, उनके सामने भी हमने लेटर के माध्यम से रखी है. साथ ही साथ महाराष्ट्र की जो वुमेन कमीशन प्रेसिडेंट है, उनके पास में भी आज ही ये कंप्लेंट डिस्पैच की गई है, और साथ ही साथ हमारे मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में भी ये कंप्लेंट. मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है. फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ये ठीक नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है. हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं. अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है. अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई. Right, Rahul Ishwar, I have only one thing to ask you. A sorry is clearly not enough, but then let's take that argument forward. Is it time we are cancelling so many things these days, is it time to cancel shows like India's Got No, Talent? absolutely no. That's the point, sir. Absolutely no. This is not a time to call for boycotts. This is not a time to cancel. This is a time to correct our youngsters. Our youngsters are brilliant. We are all in awe of whether it is a Dhruvrati, whether it is a BeerBiceps. They are all brilliant youngsters bringing out great content. What we need is guidelines. There is no point in cancel culture. Cancel culture is bad for our culture too. So what we need is positive steps so that we can regulate the content. We can channelize their energy. Nobody is calling for government being the big brother monitoring everything. But some kind of guideline is needed. Some kind of channelization is needed. They are brilliant youngsters who will bring great fame and great money to India, being the harbingers of creative economy. At the same point of time, channelization, regulation, you have to push them in a synergy in a better way. This is what the government, the institution, the courts have to say. Everyone likes, BeerBiceps. Everyone likes Dhruvrati. Even those people who criticize them regularly watch both BeerBiceps and Dhruvrati. We really like them a lot. But at the same point of time, there are some lines that nobody should cross. This is a point where we right, left or center should come together. We Hindu, Christian or Muslim should come together. And this is a topic that we cannot compromise on. And that is ethics, that is culture, that is sabhyata, and that is sanskar. There are some Lakshmana Rekhas that nobody should be crossing. I hope there will be bipartisan consensus and our orange economy should have regulation. Otherwise, people will go on giving content that is filth, that is perversion, that is absolute gross, that is against the mental health, social health, and cultural health of our nation. All right, fair enough. We'll leave it at that. Rahul Ishwar, thank you so much for taking time out to be with us here on News 9.